हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि मेरे बच्चे थोड़े टेंशन में हैं क्योंकि कल इंग्लिश का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम है और अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई है. सो स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई to help you out with the grammar activities in today's video. So students, हम जल्दी से लेते हैं कैसे एक्टिविटीज़ आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं. So students, आपको इस तरह का एक्टिविटी पूछा जा सकता है जहाँ कि आपको ऑल्टरनेटिव दिए हुए रह सकते हैं या ऑल्टरनेटिव नहीं भी दिए जा सकते हैं. वेल स्टूडेंट्स, 2 साल से बोर्ड बच्चों को ऑल्टरनेटिव दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड. अगर नहीं ऑल्टरनेटिव आता है तो आपको खुद से आंसर उसका लिखना होता है, और अगर ऑल्टरनेटिव आता है तो आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना रहता है. पर कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे ऑल्टरनेटिव दिया हो या ना दिया हो वो तो उसको देखते भी नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं. नो स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट डू लाइक दिस. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू शुड अटेम्प्ट each and every activity asked in your पेपर. सो स्टूडेंट्स, अभी हम क्विकली रिवाइज करते हैं सेंटेंसेस को. सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आपके सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा. सो सिंपल सेंटेंस मतलब उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है. वहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, जो सेंटेंस होता है उसमें एक ही क्लॉज होता है और वो क्लॉज मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. जो कंपाउंड सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपके 2 क्लॉजेस होते हैं और दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और दोनों क्लॉजेस ज्वाइन होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हेल्प से. नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टूडेंट्स. तो जैसा कि वर्ड आप ये ले सुन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना. तो ये जो सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें आप देखते हो कि एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो जो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक दूसरे से जुड़कर एक सेंटेंस बनते हैं. दैट हैपन्स ओनली विद द यूज़ ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, ऐसा आपको एग्जाम में कोई डेफिनेशन तो लिखने के लिए आएगा नहीं, आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू पूछा जाता है. सो यहाँ हम स्टूडेंट्स क्विकली एक्टिविटीज़ लेते हैं. तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बोला जा रहा है कि यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. एक चीज़ और मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि जब भी आप इस तरह के एक्टिविटी को करते हैं जहाँ की चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव पूछा जाता है, सो सिंपली डोंट राइट द आंसर. सपोज इफ ए इज़ द आंसर, डोंट राइट ए. विथ ए यू नीड टू राइट द होल सेंटेंस दैट इज गिवन. सो सिमिलरली इफ द आंसर इज बी सपोज, then you need to write the whole sentence. Just don't write A, B, C like that. So students, ये अगर क्वेश्चन है, I know that he has stolen the necklace, तो यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस क्या है? A, I know he stole the necklace. I know him to have stolen the necklace. You see, इसका तो स्ट्रक्चर ही थोड़ा अलग दिख रहा है. तो अभी मैंने सिंपल में क्या कहा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल एक क्लॉज रहेगा, वही आपका मेन क्लॉज रहेगा. तो उस तरह का सेंटेंस आपको देखना है वो कौन सा सेंटेंस है. I know him to be a thief of the necklace and D1, I know him as he stole the necklace. So obviously यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सिंपल ए में दिख रहा है. आई नो ही स्टोल द नेकलेस. So this is the correct answer. Let us take the next one. They took shelter under a building because they were tired by walking. Now इसको अगर simple sentence में करना रहे तो कैसे करेंगे? They took shelter under a building as they were tired by walking. Taking shelter under a building, they were tired by walking. Tired by walking, comma, they took shelter under a building. They were tired and, यहाँ तो and आ गया यानी कंजंक्शन आ गया. तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस नहीं है. मैंने कहा था सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन का यूज़ नहीं होगा. and took shelter under a building. तो इन चारों ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स ये जो सी है, tired by walking, comma, they took shelter under a building. This is the simple sentence. Now students, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में. यानी कंपाउंड सेंटेंस यानी जहाँ 2 क्लॉजेस रहेंगे और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे एंड दे आर ज्वाइंड बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो चलो सेंटेंस लेते हैं. Satish must work very hard to rescue his brother. So your options are
Satish must work very hard so as to rescue his brother. Satish must work hard as well to rescue his brother. Satish must rescue his brother and work very hard. और नेक्स्ट है सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर। तो यहाँ पर आपका ये जो एंड है ये कंजंक्शन है, जो मैंने पहले ही आपको कहा है कंपाउंड सेंटेंस में वो होना चाहिए, और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कन्वेइंग द सेम मीनिंग वो डी में है, सी में नहीं है, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। द सिटीजन्स, नेक्स्ट सेंटेंस है द सिटीजन्स हु हैव पेड द टैक्सेस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। इसको हमको कंपाउंड में चेंज करना है। तो पहला आपका ऑप्शन है टैक्स पेइंग सिटीजन्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। आपको देखना है कि कंपाउंड में कहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हुआ है और मीनिंग भी सेम मिल रहा है। द सिटीजन्स पेड द टैक्सेस एंड गेट रिस्पेक्ट। यहाँ तो एंड है लेकिन क्या सेम मीनिंग मिल रहा है हमें। द सिटीजन्स पेड द टैक्सेस फॉर रिस्पेक्ट। द सिटीजन्स पे द टैक्सेस एंड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। सो स्टूडेंट्स ये वाला जो सेंटेंस है आपका द सिटीजन्स पे द टैक्सेस एंड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। The interviewer was annoyed that he had not answered his queries. इसके ऑप्शंस देखते हैं। हमें कंपाउंड सेंटेंस में करना है स्टूडेंट्स, ओके। द ए ऑप्शन है द इंटरव्यूअर वॉज एनॉयड एज ही हैड नॉट आंसर्ड हिज क्वेरीज। द इंटरव्यूअर वॉज एनॉयड एट हिज नॉट आंसरिंग हिज क्वेरीज। ये तो बिल्कुल ही अटपटा लग रहा है ऑप्शन। The queries were not answered and the interviewer was annoyed. The interviewer was annoyed at answering his queries. So यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, ये देखिए the queries were not answered and the interviewer was annoyed. ये देखो तो interviewer was annoyed that he had not answered his queries. So the queries were not answered and the interviewer was annoyed. ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल। नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे देखिए क्या करना है। वहाँ पे आपको चूज करना है वो ऑल्टरनेटिव विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में मतलब एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ सेंटेंस है इस तरह से सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। तो एंड है तो यानी ये कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है, हमको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। तो यहाँ पे ऑप्शन है इफ यू सर्च्ड हिज रूम यू वुड फाइंड द क्लू। इफ यू सर्च हिज रूम यू फाउंड द क्लू। इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू। क्योंकि ये इफ कंडीशनल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है इफ़ स्टूडेंट्स। तो जब आप इफ़ एक क्लॉज में यूज़ करते हैं तो दूसरे क्लॉज में आपका विल यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में आप यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू सर्च हिज रूम तो सेकेंड क्लॉज में आपका विल यूज़ हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज इफ़ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द clue. This is the correct answer. Fourth one is also wrong. If you searched his room, you will have found the clue. No need to write in that way. Okay, because here the sentence is given in present. Search his room and you will find the clue. So when you are using if, it will be if you search his room and the another clause you have to use will there, you will find the clue. Let us move to the next. The luggage was not misplaced, but it was kept deliberately. You see the question? The luggage was not misplaced, but it was kept deliberately. So you have to use, I will not tell you now. First, let us read the option. You have to change it into complex. So keep that in mind that one clause will be independent and the other clause has to be dependent. The luggage was not misplaced but kept deliberately. Second option, the luggage was not misplaced although it was kept deliberately. The luggage was
kept deliberately, although it was not misplaced. So this is going to be the answer of this question. The luggage was kept deliberately, although. You have removed but and you have inserted although, and you have to use although in such a way that the meaning remains the same. The luggage was kept deliberately to misplace it. This is totally a wrong sentence which is giving us the wrong meaning. Next, you have to again given the options, students, where you have to frame a WH question to get the underlined as the answer. Okay, you have to choose the correct alternative to frame a WH question so as to get the underlined answer. Yes, it's correct only to get the underlined answer. Means here the question, here you have been given one sentence and then the underlined answer should be the answer of the question which you are going to frame. So you see this sentence, some thugs tried to snatch her gold chain. तो आपका क्वेश्चन WH ऐसा होना चाहिए कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, ये उसका आंसर हो. तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन आई थिंक इन इंटरव्यू, सो आई थिंक यू डोंट हैव any problem now to answer this. What some thugs tried to snatch. Some thugs tried to snatch her gold chain. Okay. What some thugs tried to snatch. What did some thugs try to snatch. What some thugs snatch. What did some thugs try to snatch. What do you think, students? Here the answer is some thugs tried to snatch her gold chain. So here the answer is, what did some thugs try to snatch? Okay, what did? So you are using here did. Let us move to the next one. Arunima was retrained as a mountaineer. What was Arunima retrained as? What was Arunima retrained? What did Arunima retrain? What was retrained Arunima? So this totally seems to be the wrong question, D1, and the correct answer is the first one. What was Arunima retrained as? So Arunima was retrained as a mountaineer. Next, an exceptional battle had begun inside the train on the move. Where had an exceptional battle begun on the move? When had an exceptional battle on the move begun? Where had an exceptional battle begin on the move? Where an exceptional battle had begun on the move? What do you think, students? Yes, quickly. Where had an exceptional battle begun on the move? So, an exceptional battle had begun inside the train on the move. So the first answer is the correct answer. Where had an exceptional battle begun on the move? Let us take the next one. This I had asked in your preliminary exam, students. With the help of the technology, I started responding the treatment. So how are you going to frame the question? How I started responding the treatment. How did I started responding the treatment? How I start responding the treatment. You see here, students, you have framed the answer in past tense, isn't it? You see, with the help of the technology, I started responding. Past continuous tense, not only past tense, past continuous. See, I started. It's past and then responding means continuous. So past continuous tense. So you have to find out
Where is that? So you see here, how did I start responding the treatment? So this is going to be the correct answer. You have used here did, and then when you are using did, I have told you many a times that with did you have to use the V1 form. Okay, where did he go? You cannot say where did he went. What did he write? You cannot say what did he wrote. Okay, so this is going to be the correct answer. Let us move to the next one. Ishita invites my family members on my birthday for celebration. When Ishita invited my family members for celebration. Next, when Ishita invite my family members for celebration. When do Ishita invite my family members for celebration? When does Ishita invite my family members for celebration? So you see here it's given in simple present tense. So when you are framing also, it has to be in simple present only. So when does Ishita invite my family members for celebration? It is the correct answer. Let us now take some more activities, students. You have to you have to transform the given sentences into exclamatory sentences. So this seems to be very easy, but still here students make the mistakes. You performed the very energetically in front of the visitors. So you have to change this into exclamatory sentence. How energetically in front of the visitors you perform. How energetical in front of the visitors you performs. How energetically in front of the visitors you performed. How energetically you perform in front of the visitors. तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स? अभी यहाँ देखो, you performed past tense है. past tense तो जब आप exclamatory sentence भी लेंगे तो past tense में ही जाएगा. How energetically in front of the visitors you performed and exclamation mark. So C is the correct answer. Let us move to the next one. You have narrated a very romantic book. What have you narrated? A very romantic book. What book you have narrated? A very romantic. What a romantic book you have narrated. So this is the correct answer. What a romantic book you have narrated. What a romantic book you have narrated. This is wrong. Let us move to the next. Students, you will be getting the activities like this, not exactly this. Choose correct alternative to make the given sentence negative. So when you are changing the affirmative sentences into negative, you have to change it without changing the meaning. For example, Sunita is the most loyal employee of our firm. And your options are, you have to change it into negative without changing the meaning. Sunita is not the most disloyal employee of our firm. Sunita is the most not disloyal employee of our firm. No other employee of our firm is as loyal as Sunita. So students, this is the correct answer. No other employee of our firm is as loyal as Sunita. So when you are using no, you have made this as negative sentence, but at the same time the meaning has not got changed. It has not got changed to students. Let us move to the next one. As soon as he entered the room, he noticed the unusual presence. So your options are, as soon as he entered the room, he did not miss the unusual presence. As soon as he entered the room, he unnoticed the unusual presence. You have to make it negative, students, without changing the meaning. Keep that in mind.
नो सूनर डिड ही एंटर। नाउ यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि डिड के साथ वी ऑलवेज यूज V1 फॉर्म, तो ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नो सूनर डिड ही एंटर, तो जब आप एज सून एज को रिप्लेस करते हो उसके जगह नो सूनर जब लिखते हो तो वहाँ पर डिड आता है, और जब डिड आता है तो उसके साथ जो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो V1 फॉर्म आता है, V2 फॉर्म नहीं आता है। तो एज सून एज के जगह जब आप नो सूनर लिखते हो, नो सूनर डिड ही एंटर, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम दैन ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। स्टूडेंट्स अब क्विकली हम थोड़ा कुछ स्पॉट दी एरर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स स्पॉट दी एरर के लिए आपको क्या करना है, पहले वो सेंटेंस आपको लिखना है अपने आंसर शीट में, और जहाँ भी एरर है उसको आप सर्कल करो और फिर से आप उसको सही ढंग से लिख के दिखाओ। जैसे फर्स्ट वन, the number of people do not matter. So where is the mistake? The mistake is here, do. तो इसको आप ऐसा सर्कल करोगे और फिर सेपरेटली लिख के दिखाओगे, the number of people does not matter. I am liking to see movies at the theater. I am liking to see, तो यहाँ पर am liking is the mistake and you will be writing I like to see movies at the theater. थर्ड लेते हैं, आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नेवर फॉरगेट्स, सो फॉरगेट्स हियर इज द एरर, आई नेवर फॉरगेट द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैज ऑफन आस्क मी, he has, when you are using present perfect tense, so with that you have to use V2 form. He has often asked me, asked, asked me to think before I speak. Again देखो स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन, नो सूनर डिड आई चैलेंज द मैन दैन ही एक्सेप्टेड इट। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी नो सूनर यूज़ करते हो आपको पास्ट टेंस में यूज़ करना है, तो उसके साथ अब डिड आप यूज़ करते हो तो डिड के साथ V1 फॉर्म यूज़ करना है। नो सूनर डिड आई चैलेंज द मैन दैन ही accepted it. Okay, no sooner did I challenge the man than he accepted it. और कुछ हम ग्रामर कर लेते हैं। आई होप माई स्टूडेंट्स आप बोर्ड नहीं हो रहे हो और यू आर राइटिंग डाउन दीज एक्टिविटीज़। इस तरह के भी आपको एक्टिविटीज़ पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड, so choose correct alternative to rewrite the sentence using the noun form of the underlined word. सो ये ह्यूमिलिएटेड है स्टूडेंट्स, तो इसका नाउन फॉर्म आपका ह्यूमिलिएशन होगा। तो अब ह्यूमिलिएशन को हमें ऐसे यूज़ करना है सो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएशन, नो। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग, नो। आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन, दैट इज करेक्ट। आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन, तो ये ह्यूमिलिएटेड का आपका नाउन फॉर्म ह्यूमिलिएशन हो जाएगा। D1 भी इनकरेक्ट है, आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलिएटिंग, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन जंगल अबाउट प्रेडेटर्स। तो आपको इसको क्या करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट गिव्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो ये आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पे बेस्ड है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका ये सेंटेंस है, द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल, तो मतलब ये सुपरलेटिव में दिया हुआ है और आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। No other animal in jungle is as reliable as langur in finding clues about predators in jungle. No other langur is as reliable as other animals. तो ये तो बिल्कुल ही गलत मीनिंग दे रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ऑप्शन को। Langur is as reliable as other animals. No, langur is not as reliable as other animals. यहाँ तो लिखा हुआ है it is the most reliable, है ना। Very few animals in jungle are as reliable as langur. तो यहाँ भी हम
वेरी फ्यू दूसरे एनिमल्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला करेक्ट है स्टूडेंट्स। नो अदर एनिमल इन जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर in finding clues about predators in jungle. Let us take the next one. I camouflaged the hide. Choose correct alternative that has simple present tense form. अभी ये बताओ ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है? I camouflaged. I camouflaged, it is given in the past tense. तो हमको इसको simple present में करना है, तो क्या होगा? I camouflaged the hide. आई एम camouflaging द हाइड क्यों करना, ये तो रॉन्ग है। आई हैव camouflaged भी क्यों करना, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। आई कैन camouflage, तो कैन हम खुद से एबिलिटी क्यों ऐड करें, तो सिंपल इसका ए होगा आई camouflage द हाइड। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, just a moment students, if you have ordered something online you can track the location, just a moment students, yes, if you have ordered something online you can track the location of your goods in transit. Choose correct alternative to use after plus ing. So you have to use after plus ing in this sentence without changing the meaning. After you have ordered something online you can track the location of your goods in transit. After ordering something online you can track the location of the goods in transit. After you have ordered something you are tracking the location of your goods in transit. After ordering something online you can tracking the location, ये तो बिल्कुल ही गलत जा रहा है, you can tracking absolutely wrong। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका ये सेकेंड वाला है ना, if you have ordered something online, ये देखिए, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम ये भी तो हो सकता है आफ्टर यू हैव ऑर्डरिंग, लेकिन ये देखो यू हैव ऑर्डरिंग, नो इट्स रॉन्ग, यू हैव ऑर्डर्ड होना चाहिए ना। तो अगर हम ये वाला लेते हैं आफ्टर यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग तो यू आर ट्रैकिंग, तो ये तो इधर यू आर ट्रैकिंग हो जा रहा है, जबकि यहाँ कैन है तो हमें वो कैन तो चेंज नहीं करना है। तो हमें सेकेंड वाला जो ऑप्शन होगा ना स्टूडेंट्स, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए कैसे, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक, तो हमारा ये जो यू कैन ट्रैक है वो यहाँ दिख रहा है, यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। वेयर एज ये वाला अगर आप करते हो आफ्टर यू हैव ऑर्डर समथिंग यू आर ट्रैकिंग, तो कैन तो गायब हो गया। नेक्स्ट वाला अगर हम लेते हैं आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैकिंग, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट वाला लेते हैं आफ्टर यू हैव ऑर्डर्ड, तो यहाँ तो ऑर्डर्ड नहीं ऑर्डरिंग है, तो हैव के साथ ऑर्डरिंग कैसे होता है, ये तो रॉन्ग है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको थोड़ा दिमाग लगाकर जो ऑप्शंस हैं उनमें से पहले तो आपको छांटने पड़ेंगे कि कौन सा गलत है, पहले उसको हटा लो, तो ऑटोमेटिकली जो बच जाएगा वो आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट इज द करेक्ट आंसर। अभी स्टूडेंट्स ये लास्ट एक्टिविटी हम ले रहे हैं, 2 एक्टिविटी बच रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप इससे आपका थोड़ा ग्रामर का आज रिवीजन ज़रूर हुआ होगा। बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू चेंज द सेंटेंस एज नेगेटिव सेंटेंस। तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपको इसको नेगेटिव करना है, यानी नो नॉट का यूज लाना है, लेकिन मीनिंग इसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेट अस टेक द ऑप्शंस। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये तो बिल्कुल हम यहाँ पे सिंपल ऐसा नॉट कर देंगे तो थोड़ी ना वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मीनिंग तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट अ कंपाउंड प्रोसेस। अब ये कंपाउंड कहाँ से आ गया? कॉम्प्लेक्स था तो कॉम्प्लेक्स ही रहना चाहिए था, कंपाउंड कैसे हो गया? बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि ईजी, तो हमें यहाँ पर डिफिकल्ट होना चाहिए था, तो ये तो डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ आपने नॉट भी डाला। और ये जो जब आप नॉट ऐसे डालते हो ना स्टूडेंट्स, तो ये कॉम्प्लेक्स का अपोजिट क्या है? सिंपल। तो यानी ये जो सेंटेंस है, इसका जो मीनिंग है वही मीनिंग आप नेगेटिव में भी जब इसको चेंज करते हो तो सेम मीनिंग होना चाहिए। सो देखो, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, स्टिल द मीनिंग रिमेन्स द सेम। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस, मीन्स इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेट अस मूव टू द लास्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। इसको भी हमको ट्रांसफॉर्म करना है एज अ नेगेटिव सेंटेंस, ओके, एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। तो फिर से हम वही वाला स्टाइल, दिमाग, टेक्निक अपनाते हैं। द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट, डिडंट यानी डिड नॉट, ओके, डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। सेकेंड, द पुलिसमैन हैड नेवर एक्सेप्टेड, ये नेवर खुद से क्यों डाला? तो ये तो सेंटेंस होगा ही नहीं, ये तो मीनिंग अलग हो रहा है। हैड नेवर एक्सेप्टेड सोपी इवन एज अ क्लू। द पुलिसमैन डिडंट, फुल फॉर्म डिड नॉट एक्सेप्टेड। अभी मैंने कहा डिड के साथ V1 फॉर्म यूज करना है, यानी ये भी गलत हो गया। द पुलिसमैन कुडेंट, अब ये कुड कहाँ से आ गया? कुड तो यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट, रिफ्यूज का मतलब एक्सेप्ट नहीं करना है ना। सो नॉट भी आ गया, और रिफ्यूज का अपोजिट होता है एक्सेप्ट, वो आपने डाल दिया, तो द मीनिंग रिमेन्स द सेम। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू बोल दो, या द पुलिसमैन डिड नॉट और डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू, मीनिंग रिमेन्स द सेम।